Good morning. Am I audible? Yes, sir. Morning, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Visible, no? Yes, sir. Okay. Thank you. So today what we will see is the Riesz representation theorem. So let me first write Riesz representation. Good morning, sir. Good morning. So we all know that every inner product space is a normed space. Therefore, every Hilbert space is a Banach space. So whatever concepts we have learned for Banach spaces, they hold for Hilbert spaces as well. Okay, so if you remember, in Banach spaces we learned about bounded linear functionals. Okay, do you all remember this? हेलो हाँ आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो ये से बोला था मैंने, शायद मेरी आवाज नहीं है। अच्छा, आप शायद म्यूट रही होंगी। ओके, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो आपने कुछ इस तरह से बाउंडेड लीनियर फंक्शनल और नॉर्म के बीच में भी एक रिलेशन देखा था। इफ यू रिमेंबर दैट इफ x इज a normed linear space and suppose x naught is non-zero, any element, then you learn that you have already seen this, that there exists a functional f tilde from x to k such that, okay, so the f tilde from x to r such that what happened, norm of f tilde equal to 1 and f tilde x naught equal to x naught, norm x naught. This is what you have seen. Okay, this kind of things you saw in your Banach spaces course. So here also we will see a very nice relation between bounded linear functionals and inner product. So in fact what we will see that every bounded linear functional can be written as an inner product. Okay, so first recall what was bounded linear functional. Can anyone tell me what was bounded linear functional? Hello? सर bounded कोई टी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास dt से मतलब डोमेन से y में तो हमारे पास कोई एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर हर एक x बिलोंग करेगा डोमेन की, उसके लिए नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन sin ऑफ नॉर्म ऑफ x होता है। ये है. So when you set from x to y, so here y is the field k,
So for Yes, sir. bounded linear function, you know the codomain is the field. Okay. And we denote bounded linear functional by H, set of all bounded linear functional by H dash, we call it dual. So if H is a Hilbert space, its dual space is the set of all bounded linear functionals, and we denote that by H dash. Okay. Now, if you remember, for any fixed z in H, okay, we can define a functional. Fix a z in H, so that is a fixed vector. Okay. So here H, instead of H, we can take any inner product space. We are using H for Hilbert space. Okay. So Z be any vector where X is inner product space. Then you define a functional like this. So Fz of X is given by this inner product, and this is true for all X in X. So I said we define a linear functional, but for that we have to show that it is linear, and it is linear. So seeing that Fz is linear is easy. So how do you show this? Fz is linear. What you do? Z of Hello? X Hmm? X और Y लेंगे सर Hmm? एक वो F of Z और F को हमारा हो जाएगा X में इनर प्रोडक्ट टाइप के एलिमेंट है Okay, take this alpha x plus beta y, where alpha beta they come from, they are scalars, comes from K. This is alpha x plus, okay, प्लस बीटा Y this is Z comma alpha x plus alpha x plus beta y. So what it is? अल्फा बार ZX Z comma X प्लस बीटा बार Z comma Y Z comma y. Did I? ठीक स्केलर है. तो अल्फा बीटा बन जाएगा ये बन जाएगा F of ZX बीटा F Z Y ओके. तो ये हमें मिला. ठीक है. एक मिनट थोड़ा सा मैंने गलती लिखा है. So let us define this as xz, then it is, इसको आगे पीछे कर लेते हैं. ठीक है. अदरवाइज ये लीनियर नहीं हो रहा. देखो अल्फा बार और बीटा बार बाहर आ रहा है. So let's define it as xz. अल्फा तो स्केलर है सर अच्छा अगर हाँ. C से लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी Okay. Now it is okay. So क्या मिला मुझे? अल्फा fzx प्लस बीटा fzy. क्लियर? ठीक है ना? ओके. शायद मैंने नोट्स में भी गलती लिखा होगा इसका मतलब, तो आप उसको एक्जेट कर लीजिए वो, अगर मैंने zx लिखा हो तो. ठीक है. ओके सर.
ओके सो ये आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा. मैं वेरीफाई नहीं किया था, ये आपको दिखा रहा हूँ अभी इसको करने के बाद, तो आप लोग ये देख सकते हैं खुद. ओके सो what we define is fzx equal to xz. This inner product, easily we can see that this is linear. Why is it bounded? Fz is bounded. Fz is bounded, and in fact norm of fz, in fact norm of f equal to norm z. How do you see this? This is fz. कैसे करेंगे बताइए? What is the definition of norm of fz? xz का जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 1/2 नहीं, डेफिनेशन बताइए पहले. सुप्रीमम कुछ होता ना? f mod f upon norm X in x, so that norm x equal to 1. हाँ ये भी एक डेफिनेशन है, यस है ना? एक पार्ट तो इजीली आ जाएगा, एक पार्ट के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा. ओके लेट्स सी. सो फॉर दिस consider this thing, this modulus mod fzx, this is equal to xz. Okay, mod of xz. But you know Cauchy-Schwarz inequality, this is norm x norm z. So from here this implies norm f is less than equal to mod z, norm z. Correct? Here this is c. अगर आप याद करें यहाँ पर इधर जो ये norm tx लिखा था less than equal to c norm x, so this norm z is c here, so norm f is less than equal to norm z. Now let us prove that claim is norm f is greater than equal to norm z. Okay, let's do this. So for this use the definition. Norm fz is supremum mod fzx, where x comes from inner product space and with norm 1. Okay, so this is xz. So you know this z is non-zero. Okay, so take z. If z is non-zero, if z is non-zero, then you know z by norm z, this is equal to 1. Norm of this equal to 1. Correct? Hello? Is it okay? So you can replace. So since we are taking supremum over all norm, all vectors with norm x equal to 1, so this by definition is greater than equal to x z norm z modulus. Correct? Here z is non-zero. We know z is non-zero. So but from here what you get, take x and z. So from here what you get, this is 1 upon norm z z z, which is equal to norm z square by norm z is norm z. So clearly norm f z is
greater than equal to norm z. So when z equal to z is non okay, when z is non-zero, then 1 and 2 gives norm fz equal to norm z. And when z equal to 0, it is obvious. When z equal to 0, this is obvious, because in this case fzx equal to 0. Fzx, when z is non-zero, x when z is 0, so x0 is always 0. So norm of f is when z equal to 0, they both are equal. It's obvious. Okay. So so you see, for a fixed z, you have a linear functional xz, and in fact you will see in a moment that any bounded linear functional on a Hilbert space can be represented in this form. Okay. So now Riesz Representation theorem. So let's see its statement. It is very beautiful theorem. You all must know this. Every bounded linear functional on a Hilbert space H can be represented in terms of linear product. Namely, fx for all x in H, where this z depends on f and is uniquely determined by f. Okay, and there is a very nice relationship between norm of f and norm of z, and norm of f equal to norm z. Okay, so what does this theorem say? So I am repeating it in other words. So suppose we have f, a bounded linear operator or bounded linear functional. Okay, it is any bounded linear functional arbitrarily chosen. Then what happens? Then this means there exists a z in H, a unique vector which is unique. There exists. Okay, let me write it. There exists a unique vector z in H, okay, such that f of x equal to xz, inner product xz, and this is true for all x in H. This z depends on f, okay, and norm of f equal to norm of z. So this is what the theorem says. So let's see a proof of this. Any doubt, any question here? हाँ? नो सर, कोई डाउट नहीं है. हाँ. स्टेटमेंट समझ में आया? क्या कहता है स्टेटमेंट?
कोई जेड होगा जो एफ पे डिपेंड कर रहा होगा और वो इनर प्रोडक्ट बनाएगा हर एफ एक्स जो कि हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि एफ को हम इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने तुम इनर प्रोडक्ट डिफाइन मतलब so this means this theorem suggests that there are plenty of linear functionals. ठीक है, आप एक काम करिए, आप कोई भी जेड चूज करिए, कोई भी, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस है, कंप्लीट हिल्बर्ट स्पेस में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आप क्या करिए, एक पॉइंट उठाइए, एक वेक्टर उठाइए और कोई भी से W in H and you define a function G such that this it's fixed and defined, and this is true for each W in H. Okay, so means there are plenty, so this is a source of linear functional, so there are plenty of linear functionals in a Hilbert space, and you know plenty of bounded linear function. Let me so correct myself, plenty of bounded linear function. So therefore linear functional, because हाँ नहीं, बाउंडेड होगा तो लीनियर फंक्शनल तो होंगे ही ना, अगर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल बहुत है कि इसमें किसी रेस थ्योरम में मतलब जो भी एफ लेंगे, जो भी फंक्शन लेंगे, सिर्फ बाउंडेड होना ही काफी है ना उसके लिए, यानी कि जितने भी बाउंडेड होंगे हम सबको ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है उसको एक इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जो हम यूनिक वेक्टर ले रहे हैं हिल्बर्ट स्पेस, वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल पर डिपेंड करेगा। ये जो जेड है ये डिपेंड करेगा, ऐसा एक ही मिलेगा क्या हमें? हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए एक मिलेगा। ओके सर, हर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए एक मिलेगा। ठीक है, सो अगर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। Okay, so let's see a proof of this theorem. Okay, so if f equal to 0 means identically 0 means f0 means fx equal to 0 for all x in H. Okay, this is okay. Z equal to okay, then Z equal to 0 will do the job. Correct? है ना? कोई दिक्कत है इसमें? यस है या नहीं? So if f equal to 0, this means fx equal to, take x comma 0, this is always 0. So this means z equal to 0 does the job. yes sir. Okay. So therefore we consider that f is non-zero. So first see what are all the properties of z if f is non-zero. Okay, if such a z exists, suppose such a z exists, then what kind of property it satisfies? When f is non-zero, then if z exists, if, so I am writing if z exists. Okay, so we have not yet proven that z the existence of z, so we are assuming if z exists, then what could happen? So f is non-zero, z must be non-zero. Correct? Otherwise you have seen that f will be identically 0. Correct? It depends on it. That depends on it. Okay. So I am telling you, if f is non-zero, then z will be non-zero.
if you say suppose z could be 0, then fx by definition this is of this form, but you are taking z 0 always 0, so it is 0, but you are taking f non-zero. Okay, any doubt here? No, sir. Okay. So second thing, so see here, we have xz, fx equal to xz. If fx equal to 0, then xz equal to 0. Correct? Any question? This side is 0, then right hand side will be 0. ठीक है? Yes, sir. But what are all those x for which fx equal to 0? So what is this? This set x in h, fx equal to 0. So do you know what is this set? There is a nice name for this set. Hello? Yes, sir. इस सेट का नाम क्या है? Space. क्या स्पेस? कर्नल. बहुत बढ़िया. कर्नल का दूसरा नाम होता है नल स्पेस. So this is kernel of f, which is null space. और आपको मालूम हम उसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं. ठीक है? So whenever we take vectors from null space, we have this relation. So what does it mean? आपने ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ी है? हेलो? x से 0 हो गए इन दोनों So इसका मतलब कौन किस पर? So यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? z is perpendicular to x, मतलब orthogonal to x. Z is perpendicular to x for all x in NF. This means z is perpendicular to NF. Or this means Z belongs to NF per. Okay. So यहाँ से हमें एक आइडिया मिला कि अगर जो भी Z वो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? हमें ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ NF में मिलेगा. ठीक है? अभी हमने एग्जिस्टेंस दिखाया नहीं. अभी हमने बोला कि अगर ऐसा मान लो करता है तो वो क्या क्या कहाँ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए. ठीक है? एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है ना? Okay, so this means what we do, we consider the null space and its orthogonal complement. So we will consider NF and its orthogonal complement NF bar. Oh, sorry, NF per, not bar. And what properties this NF bears? So
what are all properties of NF that we know? So we know we know F is linear. So this means NF is a subspace. Okay, and it is bounded as well. Bounded means continuous. Okay, you all know what is every linear operator which is bounded, it's continuous. Okay, so from the definition of NF, NF is closed. Since F is linear bounded, so NF is a closed subspace. Okay, कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? And F non-zero. We have taken that F is non-zero. So this means there exists X in H such that Fx is non-zero. This means X not belong to NF. This means NF is not equal to H. Okay? बोलिए ठीक है ना? Okay. Now अभी क्वेश्चन है, what is H perp? What is H perp? X हाँ हाँ वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनके X you belong to H. H मेरा पूरा का पूरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है. तो H परप क्या होगा? जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा ना? बहुत बढ़िया. सो यहां से मुझे क्या मिला? और आपने पढ़ा है अगर A सबसेट है B का, दिस इंप्लाइज क्या रिलेशन होता है B और A परप में? बी पर सबसेट होता है ए पर. ओके ठीक है. सो यहाँ पर इधर से आप इन दोनों की मदद से और साथ साथ ये ऊपर वाला, यहाँ से मुझे मिला कि NF सबसेट तो है लेकिन वो उसके बराबर नहीं है. ठीक है. सो आप क्या कह सकते हैं NF पर और जीरो में कोई रिलेशन होगा? बराबर नहीं, दोनों पर है ना? तो हाँ. जीरो contained in NF पर. बट नॉट इक्वल. ठीक है. So this is from projection theorem. So what we get, NF perp is not equal to 0. So this is from projection theorem because you can write H as NF direct sum NF perp. ये आपने पढ़ा था. अगर Y कोई क्लोज सब स्पेस है, H का वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, आप जानते हैं. और आप H को Y डायरेक्ट सम Y परप के फॉर्म में लिख सकते हैं.
ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। सो इसका यूज करके हमें मिला कि NF perp is not equal to 0. So this means there exists some point Z naught in NF perp which is non-zero. Okay. We are considering a set S. So now consider the set S. वो क्या ज्योमेट्रिकली होगा हम देखेंगे. So Z equal to V. Okay. So this set S is all those vectors V which are of this form fx. इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ. So fx z naught minus f z naught x. X is in H. So let's see what is this vector. So say we are in R2. R2 में एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा. And say we have wait a minute. Okay. So suppose this is my NF. NF क्योंकि पूरा का पूरा H नहीं है तो NF क्या होगा, एक NF कुछ एक सब स्पेस होगा जो ऐसा है. ओके, ये मेरा NF है मान लेते हैं. Assume that there is a Z naught. So Z naught कहां पर है? Z naught कहां था? पर्प में. NF पर्प में. तो पर्प क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर ऐसे मान लेते हैं ये Z naught है. ठीक है. ओके. सो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है. देखते हैं, ये NF था और ये Z naught था. So what is fx z naught? So we have rescaled it. So fx z naught एक वेक्टर होगा जो z naught की डायरेक्शन में ही होगा, बट उसका अगर fx ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो ओके मॉड ऑफ fx ग्रेटर देन 1 है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको. कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला डाल देते हैं. तो अगर ये है तो आपको पास ऐसा कुछ दिखेगा. अगर मॉड ऑफ fx लेस देन 1 है तो इससे छोटा होगा, बट वो सेम डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. तो थोड़ी देर के लिए हम, क्योंकि फिगर मैंने z नॉट बहुत छोटा बना दिया है, तो मैं fx को मॉड fx ग्रेटर देन लेता हूं. तो सी दिस इज माय fx z नॉट. So this is fx z naught. दिक्कत इसमें? ठीक है ना? नहीं सर. हाँ. Okay, now take any x, any arbitrarily x. थोड़ी देर के लिए x, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पहले से बना हुआ पॉइंट है, इसको x ले लेते हैं. ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं फिर f ओके. सो ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. so see, we have, this is my x
एक कलर चेंज कर लेते हैं और ब्लू लेते हैं। Say this is X and suppose FZ0 कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है। FZ0 मान लेते हैं, उसका मॉडुलस लेस देन 1 है, एक का बड़ा मान लिया, उसका छोटा मान लेते हैं। तो आपको मालूम है FZ0 X जो है उसका मॉडुलस X से छोटा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि कोई और कलर नहीं है, कलर ये कलर लेते हैं। So say this is our FZ0 FZ0 X. Okay. So this is FZ0 X. This point FZ0 X. अभी आपको ये मालूम है FX/Z0 माइनस FZ0 X दो वेक्टर है, उनका डिफरेंस है। तो आपको मालूम है कि V कहां पर होगा। आप दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में, ओ ये गड़बड़ा गया, इसी डायरेक्शन में पीछे जाएंगे। ठीक, ये बहुत अच्छा नहीं बना है, यहां से सेम ओके। ये है आपका क्या, माइनस ऑफ FZ0 X माइनस ऑफ FZ0 X। और आप इनको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। तो इस डायरेक्शन में एक इसके पैरेलल आपने कुछ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन इसको मिला दिया है। ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, अच्छा नहीं बना पा रहा हूं मैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। अभी ठीक है, शायद ठीक है, लग रहा है पैरेललोग्राम से। हाँ सर। देन अगर नहीं भी लग रहा है तो मान लेते हैं, ठीक है। कलर क्यों नहीं आ रहा, कलर कैसे आएगा, कि यहाँ से आएगा। सो देन दिस इज V, this is V, whatever this vector, this is V। so आपको समझ में आया V क्या है, डिफरेंस है हाँ FX/Z0 डिफरेंस है इन दोनों का। और फिगर में ये कुछ ऐसा दिखता है, ओके। so what we do now, we apply F on V, FV equal to F of FX/Z0 minus FZ0 X। you know F is linear functional, these Fx and Fz0 they are scalars, ठीक है। यस तो सर। ये Fx बाहर आ जाएगा, Fx Z0 माइनस Fz0 F x इक्वल टू 0, ठीक है। दिस मीन्स V belong to NF। V belong, ओ ये मैंने क्या लिखा, V belong to। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने ये फिगर बहुत अच्छा नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे F के बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है, F क्या होगा, ओके। तो एक्चुअली ये जो V था वो कहां पर आना चाहिए था, बाय दिस कैलकुलेशन वो V यहाँ पर आना चाहिए था, या फिर यहाँ कहीं आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम F के बारे में अभी जानते नहीं है, तो इसलिए वो कुछ आर्बिट्रेरीली हमने बनाया है। लेकिन बाय जो भी हमने कैलकुलेशन किया उसकी मदद से क्या आ रहा है हमको, V belongs to NF, V is a vector of null space of F। आप समझ रहे इसको,
Yes, sir. This implies S is a subset of NF. Okay, we choose arbitrary V in S, and we saw this V belongs to NF, therefore S is a subset of NF. Okay, Sir, but then what it would be? VZ dot. Z dot कहाँ पर रहता? Z नॉट NF परप में NF परप में, और V क्या है? NF में है, तो इनर प्रोडक्ट VZ नॉट क्या होगा? So जो आ Z naught जाएगा belongs to NF per, V belongs to NF, so this is equal to, Right. हाँ, जीरो हो जाएगा ना दोनों में से। जीरो हो जाएगा, बहुत Section zero. बड़े। So now use the definition of V. This is f x z naught minus f z naught x, comma z naught. ओके, तो इसका यूज करिए। सो पहले ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो ये बाहर आ जाएगा, एफ एक्स जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट एक्स जेड नॉट. ओके, सो दिस इज एफ एक्स norm z naught square minus f z naught x z naught. So this implies ये जीरो है, जीरो equal to this thing. So from here what you get, fx equal to f z naught x z naught by norm z naught square. ओके, Yes, sir. अभी आपको कुछ एफ एक्स का एक फॉर्म मिल गया. एफ एक्स को आपको दिखा कि ये एक्स जेड नॉट के फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपने अब एक काम करते हैं, इसको क्योंकि ये स्केलर है, इसको इसके साथ अटैच करते हैं. हमें याद करो हमारा क्लेम क्या था कि हमको प्रूव करना था एफ एक्स इक्वल टू एक्स जेड. ठीक है, हमें कुछ वैसा मिल रहा है, लेकिन साथ में एक स्केलर मिल रहा है, ये स्केलर मिल रहा है. तो इसको हम इनर प्रोडक्ट की मदद से वेक्टर के साथ अटैच करते हैं, देखते हैं. सो क्या मिलेगा बताइए. सो एफ एक्स विल बी एक्स, ये पूरे के पूरे को अल्फा मान लो. जब ये जेड नॉट के साथ जाएगा तो अल्फा बाहर आ जाएगा, है ना. ठीक है. हेलो, Yes, sir. यहाँ पर कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, सो ये क्या है, एक्स कमा एफ जेड नॉट बार जेड नॉट. ओके, so define this as z, call this z. So this is equal to z, where z equal to f z naught bar by norm z naught square z naught, and this is a vector in H. So this x was chosen arbitrarily, therefore our claim is proven now. So we have proved our claim, we are done. But one more thing is remaining to show. What is that? This z is uniquely determined by f. So this z is unique. This is what we will show now. Suppose, so uniqueness now, uniqueness.
So existence we have shown. Now what we saw, f is, so this z is unique, and one more thing, that norm of f is norm of z. Two things we have to show. So uniqueness is easy. So assume there are two vectors z1, z2. Okay, assume there exists z1, z2 in H such that fx equal to xz1 and xz2. Can you conclude from here that z1 equal to z2? कर सकते हैं easily xz1 equal to xz2. This implies xz1 minus xz2 equal to 0. This implies xz1 minus z2 equal to 0. And this is true for all x for h. Okay, this is true for all x in h. And by a result that you already know, or you can again prove it, that this implies z1 minus z2 equal to 0. So this is by a result that you already know. Otherwise, what you can do, this is true for all x in h, x equal to z1 minus z2. Okay. So from here, this is z1 minus z2. z1 minus z2 equal to 0. But what is this? This implies z1 minus z2 square equal to 0. Norm of this. So norm of any vector is 0 implies vector is 0. Prove. Finally, last thing that the norm is preserved. Means norm f equal to norm z. So if f equal to 0, nothing to prove, then z equal to 0, and therefore norm f equal to norm z. When f is non-zero, then we will see what happens. When f is non-zero, then z is non-zero. Okay? Correct? And Yes. we have fx equal to xz for all x in h. So take x equal to z. This implies fz equal to z comma z, which is norm z square. Okay? And f is bounded as well. F is bounded. So this means norm z square equal to mod of fz, norm of f, norm of z. From here you get norm z is less than. And so what we now prove is norm z is greater than norm f. So now we will show this part. So for this, use the definition of norm. Okay, so norm of f is supremum of mod of fx. So take mod of fx. Mod of fx is nothing but norm of xz, and use Cauchy-Schwarz inequality here. This is norm x, norm z. Okay. Yes, sir. So by definition, norm f equal to supremum taken over all fx f norm with norm 1. Okay. So
from here this is supremum of mod xz x in h norm x equal to 1. Okay, and use this here. So Cauchy Schwarz. So this is less than equal to norm x, norm z, but you are taking norm x equal to 1, so this is norm z. Okay, so this implies norm f is less than equal to norm z. So this is proven. From here and here, what we saw is norm f equal to norm z. We are done. So this proves the Riesz representation theorem. Any doubt, any question, comments? Hello? यस सर सर बेनिफिट क्या है इसका एप्लीकेशन क्या होगा हाँ देख बेनिफिट आपको मैंने बोला ना कि ये थ्योरम क्या कह रही है थ्योरम कह रही है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है आपको एक सोर्स मिल रहा है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल का क्या सोर्स है कि जितने भी आपके पास कोई भी वेक्टर उठाइए और इनर वो क्योंकि आपको मालूम है हिल्बर्ट स्पेस बाय डेफिनेशन इट इज कंप्लीट इनर प्रोडक्ट सो यूजिंग ओनली इनर प्रोडक्ट you get a bounded linear function. So एक बना बनाया आपको bounded linear function और इसके और भी हम एप्लीकेशंस देखेंगे और एक और बात ये सेम थ्योरम आप लोग कहाँ पर देख होंगे मेजर थ्योरी में भी आपने रियज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम देखा होगा आई एम इसके बारे में बात हुई वहाँ मेजर थ्योरी में हेलो सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ तो शायद आने वाली क्लासेस में होगा और इसके अलावा एक और बात मुझे आपको बहुत पहले बोला था कि एलपी स्पेसेज ये मैं वेट करूंगा जब तक आपके मेजर थ्योरी क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा पढ़ाने वाले हैं ये शायद पढ़ाने वाले हैं ओके आज से स्टार्ट होगा तो आप लोग सर से पूछिए कि एलपी स्पेसेज नॉर्म्ड स्पेस है क्या ये बेनाक स्पेस है ठीक है और साथ में पी में क्या कंडीशन होगी एलपी इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा ओके तो ये किन पी के लिए इनर प्रोडक्ट होता है और क्योंकि आप लोग ये पहले से देख लेंगे कि ये बेनाक स्पेस है तो इसका मतलब कंप्लीट है ये पहले से कंप्लीट है ओके तो अगर जिस भी पी के लिए ये इनर प्रोडक्ट होता है उस पी के लिए हिल्बर्ट स्पेस होगा तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आप ये सर से इसके बारे में बात करिए फिर मैं आपको इसका दूंगा ठीक है तो ये हम ये फंक्शनल एनालिसिस और मेजर थ्योरी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो ये दोनों सिलेबस में आपको दिखेगा यहाँ भी और वहाँ भी इसीलिए मैंने ये गेट किया था इसको नहीं किया था ठीक है जब तक वहाँ नहीं समझेंगे यहाँ समझ में नहीं आएगा
ओके देन बाय, कल मिलते हैं।